आइए अब हम बात करते हैं एक और मेथड की जिससे हम प्रोब प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट मेथड इज नोन एज एंड फिलिंग मेथड। एज द नेम इंडिकेट्स दैट दिस मेथड इज गोइंग टू यूज द एंड्स ऑफ द डीएनए। अगर हम इस मेथड का कंपैरिजन करें with the nick translation method, the end filling method is a gentle method. But on the other hand, the end filling method may not give high specific activities to the probe as compared to the nick translation method. Sticky ends versus blunt ends. What is the difference between these two? अगर हम DNA को एंडोन्यूक्लियसेस के साथ ट्रीट करें to get smaller fragments, जो कि हमारी ज़रूरत है प्रोब बनाने के लिए, तो हमारे पास दो तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द वन इन विच यू कैन हैव द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इन दोज केसेस these DNA molecules treated with endonucleases, they have unequal two strands, and we can call them as overhangs, which are single stranded and their complementary portion on the other side of the strand is missing. In some other cases, when we treat the DNA with endonucleases, the blunt ends are produced. अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें जो कि DNA को रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स लेंथ में एग्जैक्टली बराबर हैं, दे आर इक्वल। द स्टिकी एंड्स प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ इट्स सेकेंड स्ट्रैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। सो दिस इज द एंड विच इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय दिस मेथड। सो द लिमिटेशन विद दिस मेथड इज दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स विच हैव स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स को फिल करने के लिए हमें एक क्लिनोव फ्रेगमेंट एंजाइम चाहिए होता है। अगर हम क्लिनोव फ्रेगमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखें, डीएनए पॉलीमरेज 1 फ्रॉम ई कोलाई, it has two activities. One is polymerization activity and the second one is exonuclease activity. These two activities are associated with two different components of DNA polymerase 1. And if we remove those two components, the exonuclease activity is separated, polymerization activity is separated. That part of the enzyme which has the polymerization activity is then used for these actions, and that is called as Klinov fragment. This Klinov fragment is going to be used to fill up this single strand or the sticky ends, and the length of the sticky ends are going to determine how many radio labeled nucleotides are incorporated. Generally, these sticky ends are not very long in length. They are not having hundreds of base pairs. They are having few base pairs, and the radio labeled nucleotides which is incorporated in the sticky ends extension, that will have very low specific activity which can be detected during autoradiography.